Yes. Hello and welcome to another episode of Cricbits and Pieces. We are a two-member team here today. With me, Mridul, is Rohit Bhai, the evergreen Rohit Bhai with a green background. And today in this video, we will be discussing KKR, one of the old favorites of IPL. So with this, रोहित भाई क्या है आपके केकेआर के बर्निंग टॉपिक्स? मृदुल भाई मतलब केकेआर तो मतलब हम लोग जब शुरू हुआ आईपीएल तो पहला टीम था जिसको सपोर्ट करते थे। मतलब दादा के कारण सपोर्ट था और तब से हमेशा एक अटैचमेंट रहा है और हमेशा चाहे अच्छा करे। और आईपीएल के इतिहास में वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल टीम्स मतलब चेन्नई, मुंबई एंड केकेआर हैज बीन दी रियली गुड टीम्स अलोंग विद हैदराबाद, जिसमें बहुत सारे कप्स जीते हैं। मेरे हिसाब से केकेआर का सबसे बड़ा इशू है उनका कप्तानी, स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ में। इफ श्रेयस अय्यर इज नॉट देयर, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको खरीदा ही गया था। ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, नो डाउट अबाउट दैट, बट देन कि कप्तानी करेंगे, दिल्ली में ऋषभ पंत के कारण मौका नहीं मिल रहा था। तो मेजर पहला टॉपिक तो यही होगा, क्योंकि जहां तक सुनने में आया है नीतीश राणा इज गोइंग टू बी देयर कैप्टन फॉर द फर्स्ट, जितने दिन भी ये नहीं रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा होल मेरे हिसाब से कैप्टनसी है इनके लिए फिलहाल। तो फर्स्ट थिंग तो यही है डिस्कशन के लिए। क्या आप क्या कहते हैं? राइट, आई डोंट थिंक उनके पास अब चॉइस रह गया है बिकॉज एज सून एज श्रेयस अय्यर सेड कि ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। एक्सपीरियंस के नाम पे नीतीश राणा इज one person who is experienced enough through domestic cricket to lead a team. I know उनके पास टिम साउथी है, but टिम साउथी is not a guaranteed starter. तो इसकी वजह से it becomes a risk for them to give leadership to Southee, and hence Nitish Rana becomes the obvious person to become the captain. Uh, I don't know how it will play out because we have never seen Nitish Rana in a leadership role. Uh, these things can go either way. Like it can be like a, what do I say, a miraculous न्यू बिगिनिंग। हमने कभी देखा था हरभजन सिंह को मुंबई का कैप्टन बनाया गया था, एंड हरभजन सिंह प्रूव टू बी अ वेरी एस्ट्यूट एंड गुड कैप्टन. नोबडी एक्सपेक्टेड दैट. सो like I said, we don't know how it's going to play out, but another new dynamic, another new angle for this IPL, something to look forward to. मृदुल, मतलब मेरा एक सवाल ये है कि मानता हूं कि अगर इनके अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को देखा जाए तो शायद एक्सपीरियंस के नाम पे इसके बाद शार्दुल ठाकुर बच रहे थे। ऑफ कोर्स आप शार्दुल ठाकुर को शायद कप्तान नहीं बनाना चाह रहे हैं ऑल दैट। एंड देन अगर फॉरेन टीम के प्लेयर्स में देखा जाए तो शकीब है, सुनील नारायण है, आंद्रे रसल हैं। एंड अगेन मैं मानता हूं कि शकीब अल हसन शायद नहीं 11 में हर दिन खेले, आंद्रे रसल का भी फॉर्म थोड़ा, बट सुनील नारायण डोंट यू थिंक कि दे कुड हैव गॉन? मतलब वरुण चक्रवर्ती थोड़ा फेड कर गए एंड मे बी सुनील नारायण विल बी Right. प्लेइंग ऑल द मैचेस। आई एम अगेन, सुनील नारायण के पास भी कोई ऑब्वियस बहुत सारा एक्सपीरियंस कप्तानी का नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस स्टेचर he could have been one of the options. मतलब if we see David Warner has been made the captain for Delhi, so I thought कि they could have gone for this name also maybe, but then that's my opinion. आप क्या कहते हैं इस पे? Right. I think it's a case of once bitten, twice shy when it comes to KKR, because उनका past experience with a foreign captain was not that great. So Yeah. when Ian Morgan, who is a proven captain, like there's no doubt about Morgan's leadership capability, but he when he was a captain, he was the fourth best foreign player in his team, and there was always a question mark कि Morgan को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए. They don't want to get into that situation. And Sunil Narayan and Nitish Rana को देखा जाए तो as far as captaincy credentials को, they both have limited experience. कि दोनों में से किसी को बहुत ज्यादा experience नहीं है. So no one is like clearly staking a claim कि मुझे captain होना चाहिए, and hence I thought they took a safer choice by going with the Indian name instead of a foreign name. Otherwise, it's a toss of coin.
on who becomes who does better, and nobody knows. I don't think even KKR management would know what would turn out better. I think they went with a safer choice, and it's fair. Like the team is already in turbulence with Shreyas Iyer not being around. Absolutely. They so ऐसे में going with the safer choice, I felt it's fine. चलिए ठीक है, आप इस टीम के अगर कंपोजिशन की बात करते हैं, whom do you see as the opener of this team? इन्होंने जिस तरह से अपने ऑक्शन को प्ले आउट किया, इससे ये साफ साफ दिखा कि इनका माइंड सेट है टू हैव अ विकेट कीपर एज देयर ओपनर अलोंग विथ अ प्लेयर दैट दे लाइक वेरी मच, दैट इज वेंकटेश अय्यर. सो गिवन दैट लिटन दास इज नॉट अवेलेबल टूर्नामेंट के स्टार्ट में, गुरबाज एंड वेंकटेश अय्यर would be the openers of choice for KKR, the way they play. Number three becomes a hole uh, due to the absence of Shreyas Iyer. Uh, but they have Jagdishan. So I think they may just put Jagdishan in at number three to hold the batting together, or they might want to experiment and put Jagdishan at the top and put Venkatesh Iyer somewhere down the order. So that's a permutation that they can do. बट गिवन उन्होंने जो अब तक प्रेफर किया है, आई सी वेंकटेश अय्यर एंड गुरबाज. ओके, सो जस्ट टू आस्क यू, मतलब गुरबाज के आने से एक तो ये होता है ना कि आपका फॉरेन के 4 प्लेयर का एक कोटा चला गया. तो राइट, अगर मान लेते हैं कि यू हैव गिवन थ्रोन इन द मिक्स की जगदीशन भी हो सकता है, इट कैन बी कि राइट. मान लेते हैं कि जगदीशन along with Venkatesh Iyer and number 3 पे मनदीप सिंह. Do you see that possibility? It's possible when Shakib is playing. Yeah. I don't think they will do that. If they do that and they ask Jagdishan to keep wickets, then that means they're opening up a slot for a foreign player. Now, who is that extra foreign player? Let's go through the playing 11. Done. कि उनके foreign players कौन है. तो अगर हम बॉटम पार्ट से शुरू करते हैं, बॉलिंग लाइनअप शुरू करते हैं, बिकॉज वो बहुत स्टेबल है. बिल्कुल. सो if we start from number 7, it's Sunil Narayan 7, Shardul Thakur 8, Yes. Southee or Ferguson at 9, Yeah. whichever they want to pick. Absolutely. Varun Chakravarti and Umesh Yadav. Absolutely. तो ये बॉटम 5 बहुत स्टेबल है, बहुत सेटल्ड है. इट्स वन ऑफ द मोर पोटेंट अटैक्स that any team has. So, and when we go one step above the bottom 5, at number 6, Russell is there. बिल्कुल. So, इन 6 में इनके 3 फॉरेन प्लेयर्स हो गए, रसल, नारायण एंड 1 आउट ऑफ साउथी और फर्गसन. बिल्कुल. अब अगर आपकी बात ले ले कि दे आर स्टार्टिंग विथ से वेंकटेश अय्यर एंड जगदीशन एज ओपनर्स एंड मनदीप सिंह एंड नीतीश राणा, और say Rinku Singh and Nitish Rana. Let's say they don't want to play. They say play Rinku Singh and Nitish Rana. तो 4 इंडियंस हो गए, एक स्पॉट बचता है. Now David Visa at 5 is a person batting a bit high Absolutely. as per his liking. So this combination is possible if Shakib is playing, which again is not happening at the start of the tournament. Shakib. So I do see them starting with Gurbaz. तो बेसिकली द टीम कंपोजिशन माइट बी समथिंग लाइक दिस कि पहले 3 में गुरबाज, जगदीशन एंड वेंकटेश अय्यर. 4 पर इनका कप्तान आता है नीतीश राणा, हैज टू कम एट नंबर 4. नंबर 5 पे आपके पास फिर से हमारा ही कोई अंदर का बैट्समैन होगा, रिंकू सिंह में भी, मनदीप सिंह या रिंकू सिंह में से कोई एक. छठे पे रसल, और उसके बाद जो 5 बॉलर्स की हमने बात पहले ही की कि भाई आपका 7 पे नारायण अच्छा बैटिंग कर लेता है, 8 पे शार्दुल ठाकुर अच्छा ही बैटिंग कर लेता है उस पोजीशन के लिए, 9 पे फर्गुसन या टीम सऊदी डिपेंडिंग ऑन क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, और 10-11 पे आपके पास वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव. दिस ऑन पेपर थोड़ा बैटिंग लाइट लगता है बिकॉज श्रेयस अय्यर वाला बिग होल आ रहा है, क्योंकि इंडियन जो बैट्समैन है
वेंकटेश अय्यर बहुत रिलेटिवली यंग है इंटरनेशनल सर्किट पे भी। नीतीश राणा भी हार्डली 2-3 T20 ही खेल रखे हैं। रिंकू सिंह इज वेरी वेरी इनएक्सपीरियंस, जगदीशन भी इनएक्सपीरियंस। सो बैटिंग लाइट लगता है ये लोग। और श्रेयस अय्यर आने के बाद थोड़ा जरूर एक्सपीरियंस आ जाएगा, बट लेकिन एट दिस मोमेंट दैट इज वन थिंग दैट दे आर मिसिंग आउट। राइट, एंड बिकॉज दे आर बैटिंग लाइक, इट्स पॉसिबल कि वो नंबर 5 पे जो हम कह रहे हैं कि वन आउट ऑफ मनदीप सिंह और रिंकू सिंह खेले, इट्स पॉसिबल कि दोनों खेले and they use a bowler as the impact sub if they are batting first. And बिल्कुल when they are bowling first, they can just remove a bowler and bring in whosoever of Mandeep and Rinku is not in the playing 11. So they just add that extra player in there just to cushion up the batting. But बिल्कुल I don't see that helping them. The reason being, and this is where the soft spot for KKR is, that they don't have players with high ceiling. Nitish Rana ka ceiling 300 plus runs in an IPL season. He is consistently getting 300 plus runs, but he's not getting 400 plus runs ever. एब्सोल्युटली नो। And same applies for almost all their batters. बिल्कुल तो वहां पे दिक्कत है कि अगर आपके सारे बैट्समैन, चाहे वो मनदीप हो या रिंकू हो, अगर 15 20 25 रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं, सो हाउ डज इट गिव स्टेबिलिटी टू एन इनिंग्स? कैसे एक इनिंग्स कंस्ट्रक्ट होगी? The only way is for them to somehow gather that courage कि उनका lower order strong है. They have people like Sunil Ryan, Shardul Thakur, and if they play Southee coming in at 9, they have big capable lower order players and they could go gung ho right from the start. But if they try to play cautiously and try to preserve wickets, they anyways don't have a high ceiling, and that's where they might end up struggling. बिल्कुल। मेरा लास्ट सवाल एक रहेगा और कि हाउ डू यू सी आंद्रे रसल? Potentially an IPL great, but then over the last 1 or 2 seasons, देखने में आ रहा है, means he has not been able to do justice. So where do you see him? Because this is a very very important tournament for him because age उसके side में नहीं है. Fitness was never on his side. He is not somebody who is going to give you 4 overs per match plus a lot of runs. So how do we see him now? That's the last thing. It's hard to say which Andhra Russell is going to turn up this year. I think he did okay last year, but the year before that was extremely bad. And then again, if we look a year further back, he was playing his best cricket in that IPL. Absolutely. So his form moves up and down when he plays for KKR, and but he performs better for KKR as compared to Other what he does teams. for West Indies. So he kind of feels liked in KKR. He kind of feels wanted in KKR, and Because he has to KKR will perform hope. if KKR has to do well. बहुत ज्यादा दारोमदार Agreed, रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब। agreed. जहाँ पे स्टार्टिंग में बैटिंग वीक है, वहां पे इट विल ऑलवेज मैटर कि वो 12th 13th ओवर तक जब रसल आ रहे हैं, तो बियॉन्ड दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ पुश दे कैन गिव. In that sense, I think they are very fortunate this year to have Shardul Thakur. They've traded Shardul Thakur into their team, and I think Shardul Thakur's batting might become a key factor for KKR going forward. Like we did not get to see that when he was playing for Delhi. Who knows? We might just see that this year. No, just add to this point of yours, मेरे हिसाब से केकेआर के पास अब वेरी गुड बैकअप है डेविड विजे के फॉर्म में भी. He has consistently shown in PSL and even for Namibia, the team that he's playing of late, he is good. I'm not saying he's express pace, but with his experience, he understands what sort of line length to bowl. And of course, he's a good enough batter also to contribute that handy 20 runs. So again, it all depends because I don't see Russell playing all 14 matches. स्पेसिफिकली एट द वेरी बिगनिंग. तो कहीं ना कहीं शकीब भी है आपके पास बैकअप के तौर पे, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन. व्हेन आई थिंक वो लोग पहले दूसरे मैच के बाद आ रहे हैं ना, ये बांग्लादेशी सारे.
I think they're missing 3 games, 2 or 3 games at the Yeah, beginning that's of what, 2 or 3 games के बाद मतलब लिटन दास is also very good because गुरबाज को हमने बात किया है, लिटन दास is in the form of his life, तो मे बी गुरबाज की जगह लिटन दास को भी बाद में ये लोग ट्राई कर सकते हैं. So overall looks to be a good team, batting thin, and श्रेयस अय्यर को ये लोग चाहेंगे जितने जल्दी आए. That's the thing they would be hoping, Right. isn't it? So, predictions. I don't see them in the best 4 teams right now. I don't see that. Same here. Same here. I don't see them in the best 4. Yeah, that's what. But I hope their bowling carries them through. Yeah, So I love their bowling. Ferguson is really exciting to watch, and then Umesh Yadav, Rahul Parashar nahi hai, he's a huge fan of Umesh Yadav. Apart from that, Sunil Narayan, Varun Chakravarti. I hope Varun Chakravarti does well because you know World Cup का माहौल है इंडिया में. वरुण चक्रवर्ती, if he does well, it only gives us one more option. But then yes, he has to work a lot on his fitness, fielding, all those elements. So but एक्साइटिंग टीम है. बहुत हद तक चांस है कि कर भी जाए, लेकिन अभी जैसा लगता है बैटिंग के कारण शायद फर्स्ट 4 में नहीं आ पाए. so out for you and out for me. एब्सोल्युटली डन है. सो Okay. Okay. So thank you all for viewing this, and we will see you in the next episode. Crickbits and pieces. थैंक यू.